Okay, Jitu. Uh, when we have an AVL tree and we insert or delete something, some node, some value into the AVL tree, it may disturb the properties of the AVL tree. So we need to perform a transformation, and the transformation should be in a way that it should maintain these two properties in the AVL tree. So the first property is that the in-order reversal of the transform tree should be the same. It's simply, in other words, it simply means that the tree should be a BST. So after the transformation, the tree should remain a BST. Remember, if this is a BST, the value that is on the root, it has smaller values in the left subtree and bigger values in the right subtree. Okay, so if I do an in-order reversal of a BST, what I would get is I would first print the value of the left child, then the root, and then the right child. That would be the value in the sorted sequence. So whenever I do an in-order reversal of BST, that is the sorted sequence. So the first property relates to that sorted sequence of data in the AVL tree. So after the transformation, the AVL tree should be a BST. Okay, and the second thing is that the transformation should balance the height or the balance factor. We discussed this term, that the balance factor of the tree should be maintained. So now let's see what these transformations are. So whenever we insert something into an AVL tree, what we would do is that we would check the balance factor of the branch on which the new node is added. So for example, if I have this tree and if I add a new node in this tree in the using the BST insert mechanism, so if the largest value is inserted in this tree, that would go towards the extreme right of this tree. Okay, so that would be the new value. So a new value is always a leaf node. Remember that in a BST, whenever we add a new value, that becomes a leaf node. So adding a new leaf node may disturb the balance factors of all the ancestors of this leaf node. So we need to check the balance factor of its ancestors. So starting from the parent node, we would move upward and find the first node whose balance factor is disturbed. Okay, and if the balance factors, if we find a node that's whose balance factor is disturbed, that is the range is that the balance factor should be between -1 and 1. So the possible values are -1, 0, and 1 for the correct balance factor. So if the values are lesser than -1 or greater than +1, then the balance factor is disturbed, and we call that specific node number A. Okay, and then we'll perform some operation on that node A, that is called the rotation operation. So we'll perform the rotation on node A. So what we would do is that we would actually do something like this. We would call the rotation routine on node number A. So that's the overall idea of the adjustments in the AVL tree after an insert or a delete operation. Of course, both the operations are similar. So we would do some rotation on the node A. Okay, so what's the rotation here is that let's see, this is a BST and we add 7 in this node. These are two different trees. Okay, so if I add this node 7 in this tree uh, uh, using a BST insert, what I have is that I add 7 on the right of 6, left of 9, and left of 8. So 7 comes here. So I check the balance factor of its parent, node number 8. The balance factor is the left subtree has height 0, the right subtree has height -1. So the balance factor is 1, which is fine. We would move further up and we would check the balance factor of its grandparent. And the balance factor of grandparent is that the height of left subtree is 1 minus the height of right subtree is -1. Right? This is null node. The height of null node is -1. So 1 minus -1 is equal to 2.
So this node is imbalanced. We call this node as node number A, following the routine that we just discussed. We call this node as node number A. And then we perform an operation, that is the rotation operation on this node number A. We would perform this rotation operation on the node number, this node 9. Okay, so we perform rotation on this node, and after the rotation we would adjust two properties. The first property is that the tree should remain a BST, and the second property is the balance factor of all the nodes should be within the range of -1 and 1, or the balance property of the entire tree is restored. Okay, so we have performed one rotation here. That this rotation is called single rotation. So in this single rotation, what we have is that we move this 9 downwards, pull this 8 and 7 upward. So the final tree is something like this. Okay, we'll discuss this rotation in details in the next slide. Do you have a question, Kosan? यस सर, ये काइंडली ये समझा दें कि ये 2 कैसे आया और 1 कैसे आया? बैलेंस फैक्टर का पूछ रही है ना? जी, जी, जी सर। अच्छा, तो बैलेंस फैक्टर मैं दोबारा से इसको इरेज करता हूँ और फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस फैक्टर अगर मैं किसी नोड का चेक करूं तो बैलेंस फैक्टर होता है उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में डिफरेंस। तो अगर मैं 8 का बैलेंस फैक्टर चेक करूं तो ये जो सब ट्री है जो कि 7 अकेला है सिंगल नोड, इसकी हाइट है 0। यस तो सर, ये 8 लीफ का, नोड होगा। ठीक है, तो यस, बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 8 इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री दैट इज 0 एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री तो उसका -1 है, यानी कि नल है। नल की हाइट होती है -1, तो उनका डिफरेंस 0 माइनस -1 क्या बना? सर बैलेंस फैक्टर ऑफ 8 इज़ अ, 0, तो वो लेफ्ट सब ट्री का हो गया है ना, ये 0 है ना, इस लेफ्ट और सब ट्री की हाइट 0 है। राइट सब ट्री जो है, जो नल होता है, नल की हाइट होती है -1। तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट, राइट सब ट्री की हाइट, इन दोनों का डिफरेंस 0 माइनस -1, दैट बिकम्स +1। सर ये नल कहाँ से आपने बताया कि नल कैसे है? ये नल है ना, इसके राइट पे कोई चाइल्ड नहीं है। इसी अच्छा, तरह 8 के अच्छा। भी राइट पे कोई चाइल्ड नहीं है। तो जिस नोड के लेफ्ट पे या राइट पे, मतलब जो चाइल्ड नल होता है उसकी हाइट -1 होती है। ठीक है, सिमिलरली अच्छा, अगर आप 9 का चेक करें तो 9 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 1, ये लिखी हुई है साथ, और राइट सब ट्री की हाइट है -1, तो 1 माइनस -1 क्या बन गया, 1 सर + 1। ये क्या कहते हैं, अगर पेरेंट का सिर्फ एक चाइल्ड होगा तो उसकी हाइट भी जो बैलेंस फैक्टर होगा वो माइनस मतलब -1 ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि नल एक जगह एक नल है और एक चाइल्ड है तो ये जो मैंने भी सिनेरियो बनाया है, इस तरह के सिनेरियोज हो सकते थे ना, लेकिन क्योंकि हम एवीएल ट्री पढ़ रहे हैं तो इस तरह के सिनेरियो तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जो अभी मैंने ठीक बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने का कहा है, जब भी न्यू नोड ऐड करेंगे तो अभी मैंने यही रूटीन डिस्कस किया आपसे कि जब हम एक सही नया नोड ऐड करेंगे तो हम उसके पेरेंट से ऑनवर्ड्स रूट नोड तक जाएंगे, जहां सही पे सही हमें पहला बैलेंस फैक्टर स्तर मिल जाएगा, हम जी जी उसको वहां पे उसको ठीक सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको नोड नंबर 1 कहेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके, से तो थैंक यू। हमने इसको नोड नंबर 1 और इसके ऊपर रोटेशन परफॉर्म कर दी। तो अभी देखते हैं कि रोटेशन कैसे। तो रोटेशन जो हमने अभी परफॉर्म की थी, दैट वाज दिस सॉर्ट ऑफ अ रोटेशन। सो द identification of this rotation is that this is the imbalance node, okay, and the imbalance is towards its left, means its left child is heavy, left child or left side is heavy. What you can say is the left subtree is heavy, and we would move to its child and see which side of the child is heavy. So the case is that left side or left child, left subtree, left side of left child is heavy. Okay, so this is the case, and we call this case as the outside case. Remember,
If this A is the root node, so I have added something on this branch. So this straight line towards left is called the outside case. Similarly, we can have an inside case where we have the insertion on the right side, right and further right of the node. So this is the outside case. Overall, these two cases where I have inserted something in the left of left child or right of right child, these two cases are called the outside cases. So I can have outside cases when I insert something into an AVL tree. So if I have um, this outside case that is towards the left side, I would perform a right rotation. Okay. Um, and the way we discussed is, I would just try to change a little bit about this discussion. For this rotation, the analogy is that I have this Mr. R here. Okay, I would place Mr. R here. And what this Mr. R would do, this is very just and honest person. Mr. R is a just person and it does not like, he or she does not like to have some injustice done to somebody. So remember, we used to have these weighing pains. Remember this shape? We would place some weight here and we would put weights here and we can measure the weight of this object. Okay, so similarly, this Mr. R, uh, he is very just and he actually tries to maintain this measuring the balance of this measuring pin. So what it does is, if it sees that this side is heavier, let's see, this is the uh, let's make this as a pin. So this is the center of the pin, this is the wing side, and this is the side where we place the weight. So if this side is lighter, what it would do is that it would pull some weight from this side and add it towards the right side. So this Mr. R would actually place a rope over here and pull this A downwards. Are you getting the analogy? Yes, Mr. yes, R sir. is a just person and he or she does not like the injustice done to this node number A. What it would do is that it would simply pull this A towards this lighter side and pull these weights B and C towards upside. So what it would maintain is the balance here. ठीक है जी, मिस्टर आर की कहानी पता चल गई सबको. Mr. R is the person who rotates this balling or weighing machine. Again, Mr. R is Mr. Rotation. So Mr. Rotation has pulled this A downwards and B has reached to the root and C is pulled upwards. So this is the rotation that Mr. R has done here. So a hidden point is this point number 2 where we could have, let me draw it in the green color. Okay, so there could be a scenario where we could have some right child of node number B. If we have a right child of node number B, this right child would detach itself from node number B and move its connection towards the right side. And if I draw this green child here, that was the right child of node number B. It would detach itself from the left side and it would attach itself towards the right side. So whatever node comes here, this green child would become the child of that node. So when I rotate the connection towards this side, it would connect to this node. Okay, so this green child that was the child of B, it becomes the left child of A. And you see, if this green node is the right child of B, and if I give some values to these nodes, if this A is the root node and all the nodes are towards the left of it, this is the biggest value. So I can give value 7 to this node A. If this is a smaller value, I can give it value 5. C is further smaller, I can say this is value 4. For this child, the value can be smaller than 7 but bigger than 5. That is 6. So if 5 had a right child as the value 6, then after the rotation, when this 5 becomes the root node, this 6 cannot be in the left subtree of 5.
right? That is why we detached it from this left side and attached this 6 towards the right side. A was 7, so it can become the left child of A, but it should be in the right subtree of 5. Got it? So this second point is dealing with this green part of the tree, that is the right child of node number B, which is not shown in the example, but definitely it should be handled if there is a child. Okay, the child on the left in the left subtree becomes the child in the right subtree. Okay? Or if you see the right child of B becomes the left child of A, this is done just to maintain the BST property. ओके जी, ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है जी, Yes, चलिए जी, तो yes. इस ठीक है जी, तो ये कुछ रिवीजन है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, लेकिन आई एम जस्ट रिवाइजिंग सम कॉन्सेप्ट्स. दैट वाज द सिंगल राइट रोटेशन. आई हैव एक्चुअली placed Mr. R on the right side of the imbalanced node and asked it to pull the weight towards right side. So that's a single right rotation. Mr. R has moved the weight towards the right side. ठीक है जी. Similarly, we can have a single left rotation where what we would do is that we would place Mr. R on the left side of A and ask it to pull this node towards left. So the weight is balanced. The weight that is heavier on the right side is pulled up and moved towards the left side. So it would take this shape. Okay. Similarly, if this B had a left child, that left child would detach itself in the second point. This left child would detach itself from this node B and it would rotate its connection and it would be connected to the node that comes on this place, that is this node A. So this child would rotate its connection and would be connected to this node A. Okay, that's the hidden point here because it's not shown in the slide, but I'll go through a complete example. I would insert values one after the other and you would see this scenario many times. Okay, so that's single left rotation. Mr. R is placed on the, this is Mr. R, Mr. rotation that is placed on the left side. So that's a left rotation. ठीक हो गया जी, तो आप नाम भी याद रखने कि I have placed Mr. R on the left side, so that's pulling on the left side or rotation on the left side. In the previous slide, I placed Mr. R on the right side and that was pulling on the right side, which means right rotation. ठीक हो गया जी, तो right rotation and the left rotation. Then there are some scenarios. Remember, I said in the previous two cases that the insertion is done on the outside of the tree. So these two shapes, when the insertion is done in the left subtree of the left child or insertion is done in the right subtree of the right child, then these two cases are the outside cases. We discussed that the outside cases, if the right side is heavy, we can rotate it towards the left side, and if the left side is heavy, then we can rotate it towards the right side and maintain the balance or maintain the weight of the root node. But if we have this scenario where on the left side we have an insertion done in the left child of right subtree, okay? Or you can see insertion is done towards the left of right child. This is the right child, this C is the right child, and the insertion is done in the left subtree. Okay? So left subtree. So insertion is done in the left subtree of the right child. So in that case, the shape is something like this. So this is not the outside case. Outside case is just a symmetric or what you can say a skewed shape where this path is takes a straight line. We are not following this path. We are moving towards the inside of the tree. Okay, so when we move into the when we add in the inside nodes of the tree, then that case is not a simple single rotation case. Okay,
let's see if we just follow the previous process. What we can do is that we see that this is the imbalance node and it's heavier towards the right side. We place Mr. R on the left side and ask it to pull this A downwards. It would pull this A downwards, C would move upward, but this child, this left child of C, it would detach itself from this side and move its connection towards the left side. What the resultant shape would be that C would become the root, A would be the left child, and this B would detach itself here and it would move its connection on this side and would connect itself with A as a right child. So the shape becomes this one, this the shape in the middle. So having a single left rotation on this shape transform this shape into this second one. This again is imbalance. C still has the height imbalance because the right side is -1, whereas the left side is 1. So the difference still 1 minus 1, which is equal to 2. So again, this subtree is imbalance. So what we would essentially want to have is that the balance factor is maintained. So let's see if we can maintain the balance factor of this tree by rotating it again. So let's see. Now we see that this C is left heavy. What we do is we place this Mr. R here and ask it to pull this downwards. C would come on this position, this A would go upward, and this B would detach itself and connect its connection on this side. So the shape would be this one. A becomes the root node, it moved up and became the root node. C became the right child, and this B moved its connection from the left subtree towards the right subtree. So this is the shape, and you see this is the same shape that we had before any rotation, before performing any rotation. So we have not solved anything by performing a single rotation on this tree or on this center tree, which means that a single rotation on an inside case. Inside cases could be in this shape or in this shape, or if I combine these both shapes, if this is the imbalanced node, if I have an insertion like on this branch or the insertion is on this branch, these are the two inside cases. These two cases cannot be fixed by one single rotation. So in that case, what we have to do is that we need to perform a double rotation. So the double rotation is this. What we do is that if when we see that the case is an inside case, what we do is that first we perform the rotation on the child which is heavy. Okay, so the imbalanced node was this root node, but the right child was heavy. We first perform a rotation on this node. And why we perform that rotation is that we want to pull this inside weight towards the outside part of the tree. So we perform a right rotation on this child of the imbalanced node. C is the child of the imbalanced node. So we perform the rotation, the right rotation on the right child. And when we perform the rotation, we placed Mr. R over here and we asked it to pull this C downwards. The C is pulled downward and B becomes the root. So we reach this shape. This shape is still imbalanced, but now this imbalanced node has an outside case here. So this can be fixed by a single left rotation on this node. So what we would do is that we would place Mr. R where we would place this Mr. R on this side of the tree, and we would ask it to pull it downwards here. So this is a single rotation. What we have is that we would pull this B and C upwards. B becomes the root and A goes down. And if we had this left child of B somehow, that would become the right child of A. So this inside case can be fixed by first performing a rotation to make this inside case into an outside case, and then to fix an outside case we just perform a single rotation and maintain the or fix the balance of the AVL tree.
So there are two rotations, and let's memorize this name LR rotation. This name is that this rotation, this R rotation, this right rotation is performed on the child, and this left rotation is performed on the imbalanced node. And the first rotation is this rotation, and the second rotation is this left rotation. Okay, so first we perform the, let me rephrase it. What we do here is that we perform, uh, if we see an inside case where the right side is heavy of the right side of the imbalanced node is heavy, what we do is that first we perform a right rotation, then we perform a left rotation. So left rotation is the second rotation, right rotation is the first rotation. First rotation is performed on the right child, and the second rotation is performed on the imbalanced node. Okay, so that's how we remember this thing. Simple name that we can give to this rotation is a double left rotation. I have skipped some part of this definition, but it's a double rotation, and double rotation is in a way that the final rotation on the imbalanced node is a left rotation. So the final rotation on the imbalanced node is the left rotation, but the first rotation is the opposite of this left rotation, and that is performed on the right child. So that is a right rotation on the right child. Okay, so it's a double left rotation is a simpler name, but the actual name that you would find in the textbooks is the LR rotation, where this R rotation is the first rotation on the right child, and this L rotation or the left rotation is the second rotation on the imbalanced node. Okay, so that's how we memorize this LR rotation, or the name of this LR rotation. Okay, okay, so vice versa, we could have the mirror image of this rotation, LR rotation, that is the RL rotation. So if we have the inside case where the left side is heavy and the right side of left child is heavy, then this is the this is the inside case, and we can fix it by first performing a left rotation and then performing a right rotation. So first performing the left rotation and then performing the right rotation. Left rotation is on the left child, and this right rotation is on the parent or the imbalanced node. ठीक है जी, और द नोड नंबर ए. ठीक है, ये नाम याद हो गया जी. तो if we perform this rotation, this left rotation on node number A, we would have this shape. We would pull this A downwards and B become the root here. So this is the alternate part of the tree. Then we would perform a rotation on the node A, and of course this node number C. This C goes downwards and B becomes the root node. So this is the final shape of the double rotation. So this is how we perform a double rotation. Though, so overall we have 4 cases, and we categorize them as outside and inside cases, 2 outside cases and 2 inside cases. Whereas in the outside cases, what we have is that if the left of left child is heavy, then a single right rotation, and if the right of right child is heavy, then the single left rotation. Which side is heavy, we would perform a rotation on the opposite direction. If right side is heavy, then we would perform a left rotation. If the left side is heavy, then we perform a right rotation. Okay, so first case is left, and the second case is right. Okay, whereas in the inside cases, what we have is that we have inserted in the right subtree of left child. So right subtree of the left child, and the fourth case is left subtree of the right child. So that is the fourth case. So we have these 4 cases, and the overall skeleton of the code would be something like this. We would have this skeleton inside the insert and the delete operation, because both the operations, these operations actually they actually break the balance property of the tree. So whenever the balance property is violated, we perform an operation whose skeleton is something like this, that we check if right side is heavy. If we find an imbalanced node, we check if its right side is heavy, and if the right side is heavy, we further check if the right subtree is left heavy, which is
uh, the imbalanced node is right heavy, and then this part says that the left side of right subtree is heavy, which means that's a double rotation. And if this left subtree of right child is not heavy, then the case is that we have right side heavy and further right is heavy, which makes it a single left rotation. And if the right side is not heavy, then this is the case, that is left side is heavy. Tree is left heavy. And in the left side, the tree is left heavy, and the left subtree, in the left side, we have a right side heavy, which is this case. So a double rotation, the double right rotation on this node. And if this tree is left heavy, but the right side is not heavy, then the left side is heavy, which makes it a single rotation towards the right. Okay, so that's a single rotation towards the right. So this is the overall skeleton that we would have for the rotations in the insert and delete function. You will see the code in a later slide, but let's see an example here. You can follow me. You can take a pen and a page and try to insert these values in an AVL tree. And after every insert, we'll check the balance property using the theory that we just discussed, that we'll check the branch on which the new node is added. We check the entire branch and find the first imbalanced node. And when we find the first imbalanced node, we call that node as node number A, and then we perform an appropriate rotation on node number A after checking the cases. If it's an inside case, then a double rotation is required. If it's an outside case, then the single rotation is required. So that's a dry run that I would go through, and I want you guys to follow me on your notebooks. Take a notebook, take a page, and take a pen and try to dial on these values, and we want to insert these values into the AVL tree. So first we'll perform a BST insert, and after insert we would try to find the imbalance in the tree. If there is an imbalance, then we would try to adjust that imbalance using any of these four rotations. So let's see, the first value is 3. Let's insert this 3, so that becomes a root node. And when there's only one node, there is no imbalance in the tree. After 3 we insert value 2. Any guess कहाँ जाएगी ये वैल्यू जी? Sir, on the left ठीक है, तो of 3 से छोटी वैल्यू है, तो we'll compare with the 3. That's smaller value goes towards the left of 3. Still we have two values. अभी भी बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि two values cannot actually take any shape that has a branch of length 2 and the other branch is of length 0. The maximum length of a branch can be 1. Okay, now we add 1 in that tree. So adding 1 in that tree is smaller than 3, smaller than 2. That's a BST insert. I added 1 in that tree. So this is a BST insert. Now we'll check the balance property. So the balance property, uh, I will check this property on the branch on which this node is added. So I would check it on this branch. I would start from the parent node. So the parent is 2. The balance vector for this node is that the left subtree has height 0. This subtree, the tree rooted at 1, it has height 0, and the right subtree is null. So the height is -1, -1. So the balance vector is 1, which is fine. We go further up and check the balance vector of node number 3. So the balance vector of node number 3 is the height of left subtree, which is equal to 1, and 1 minus the height of right subtree, which is -1. 1 minus -1, which is equal to 1 plus 1, 2. Okay, so the balance vector of this node is disturbed. This has become 2. It should have been between the ranges -1 and 1. Okay, so this tree has violated the property of AVL tree, so we would perform our rotation towards the right side. Okay, so rotation towards the right side is that we pull this 3 downwards and we move this 2 upwards. GG, question? सर ये हमने सारी करके बैलेंस नहीं करना होगा? नहीं नहीं नहीं,
एवीएल ट्री में आप साथ साथ बैलेंस करते जाते हैं। जैसे ही देखिए, हमने डिस्कशन ये की है, जैसे ही कोई वैल्यू ऐड होती है उसी वक्त रोटेशन परफॉर्म होती है। हम उसी वक्त चेक करते हैं कि अगर रोटेशन की जरूरत है तो बैलेंस कर दें, रोटेशन कर दें, अगर जरूरत नहीं है तो फिर हम उसको छोड़ दें। ओके। ठीक है। अगर आप सारे नोट्स ऐड कर देंगे फिर तो ट्री पता नहीं कितना स्क्यूड बन जाएगा ना, जी, जी, सर, बिल्कुल। तो उसको ठीक करना तो बहुत ज्यादा मसला होगा ना। तो यस उसकी बजाय सर। हम जैसे ही कहीं पे इम्बैलेंस फाइंड करते हैं हम उसी वक्त उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। सही। ठीक हो गया। अच्छा, देयर वाज अ कमेंट। अच्छा, आप साथ साथ ऐड करें, शी गुड। ठीक है जी, आप लोग साथ साथ डेफिनेटली ऐड करते जाएं। ठीक है जी। तो जब हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो इसको राइट साइड पे रोटेट करेंगे इस तरह से। ठीक है जी। तो हम यहाँ से जब पुल करते तो 3 नीचे आ रहा है, 2 ऊपर और 1 भी ऊपर जा रहा है। तो 2 बन गया रूट, 3 उसके राइट साइड पे चला गया और 1 वहीं पे है लेफ्ट साइड। ठीक है। अभी 2 का कोई राइट साइड था नहीं, अगर 2 का राइट साइड होता वो 3 के लेफ्ट पे आ जाता। ठीक है। वो जो जो भी चाइल्ड होता वो अपनी रोटेशन, वो यहाँ से अपनी कनेक्शन को दूसरी साइड पे अटैच करता, लेकिन अभी नहीं था। अच्छा, नाउ वी एड 4 इन दिस ट्री। 4 is bigger than 2, bigger than 3, it becomes the right child of 3. Balance factor of 3 is left side is -1, right side is height of right side is 0. So the balance factor for node number 3, अब मैं बारी बारी बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ। ठीक है। बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड नंबर 3 इज -1 -0, which is equal to -1, which is fine. Balance factor of 2 is equal to left side has height 0, right side has a height 1. This subtree has height equal to 1. So 0 minus 1, which is equal to -1, still fine. So there is no issue. Okay, let's add 5 in this tree. 5 is bigger than 2, bigger than 3, bigger than 4. So 5 goes here. Okay, there's another insight. Whenever we add two values consecutively in one branch, that branch, if it was balanced before the insertions, after the first insert, that branch actually has a difference of 1 from the other branch. Then we added another value. Now this is the case where this branch may disturb the balance of the tree, because now it is lengthier by 2 than the previous balance factor. Okay, so uh, here we have added 4 and 5 on the same branch consecutively, so this has violated the property. Let's see where is the violation. 4 is balanced because the left side has -1 balance and right side has 0. Let me erase some ink on this slide and we'll fill it again. Okay ji. So this 4, it has balance factor of -1 -0, which is -1 -0 is -1, fine. Balance factor of 3, that is left side has -1 height, whereas right side has height 1. This 4, the tree rooted at 4 has height 1. So -1 -1, that is equal to -2. So this 3 is imbalanced. So this is right of right. So that's an outside case, and we would perform a single left rotation. We would place Mr. R over here, and we would ask it to pull it downwards, this 3 downwards. So 4 and 5 would go upward and 3 would go downwards. So the final tree is 2 is on the root, 1 is towards its left, and towards its right, we have 4 as a root node, and 3 goes towards the left of 4, and 5 goes towards the, is still on the right of 4. So this is the final tree. We didn't have this left side of 4, otherwise we would have to move it towards the left side. Okay, so this is the final tree. um, this is a single left rotation. ठीक है जी. So this is the final tree. Okay, just a question. अगर मैंने ये सिंगल रोटेशन 3 पे परफॉर्म कर दिए, क्या मुझे फर्दर अब 2 को चेक करने की जरूरत थी कि अभी इस रोटेशन के बाद अब 2 को चेक करूं? वो भी तो सकते हैं इम्बैलेंस हो.
ठीक है जी। तो लेट्स जस्ट से कि चेक करने की जरूरत है कि नहीं, हाजिक ने कहा नो, लेकिन लेट्स डिस्कस के कैसे। बिफोर इंसर्टिंग दिस 5 इन द ट्री, ठीक है, बिफोर इंसर्टिंग दिस 5 इन द ट्री, the height of this node number 3 was 1. Remember, this 5 was not there, only this 3 had a leaf node as a child, that is 4. So the height of this tree rooted at 3 was 1, and after the rotation this position still has the height of 1. Remember, this position has height of 1. Before inserting 5 it had the height of 1, so the height of this position has not changed. If this height is not changed, then for this node number 2, the root node, the left side had height 0, right side had height 1, and after the rotation still the height is 1, so the difference is not changed. So the balance factor is still 0 minus 0 minus plus 1, which is equal to minus 1. So the balance factor is still, um, before the insert it was minus 1, after the insert and the rotation the balance factor is still minus 1. So we do not need to move further up and restore any balance factor, because we have fixed this part of the tree and restored its height as it was before. ठीक है जी। So we do not need to check further up in the tree uh, to for any imbalance in the tree. ठीक है जी, that's an insight that you should note. Okay, now let's add node value 6 in the tree. So adding 6 is bigger than 5, it goes here. So if I check the parent, it has the balance factor of minus 1. For further up in the tree, this node 4 has a balance factor of 0 minus minus 1 is 0 is the height of left subtree, minus 1 is the height of right subtree, minus 1 which is equal to minus 1. Okay, so the balance factor is minus 1, which is fine. For the root node, the left side has height 0, whereas the right side has height, this tree rooted at 4, this has height 2. So 0 minus 2, which is equal to minus 2, which means that this node is right heavy and the right side is outside the limits of the balance factor. So we have to fix this node. Let's call it node number A. So we would have to perform a rotation on this node. Let's see if it's an inside case or an outside case. So what we have is that we have this right side heavy, and after this right child, we further have a right side heavy. It means that this is an outside case, and we would fix it by just rotating it towards left. Okay. Okay. Let's say, just for an insight, if, for example, but I had, for example, if I had 6 here and 5 towards left of this, still 2 is imbalanced. Can you guess the rotation for this scenario? 2 is right heavy, and after the right child, जी जी, सर ये डबल रोटेशन होगी ना इसमें? बाकी लोग क्या कहते हैं? हाजिक, दानियाल, जो मैंने अभी स्लाइड पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन किया है, इंसर्टेड 6 बिफोर द वैल्यू 5। तो हुआ क्या कि जब मैंने 6 पहले ऐड किया तो वो 4 का राइट चाइल्ड बना, फिर उसके बाद 5 ऐड किया तो बिकेम दी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 6। अब ये जो ट्री बना है इसमें 2 इज स्टिल इम्बैलेंस्ड, क्योंकि 4 वाले सब ट्री की हाइट अभी भी 2 है, तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2। ठीक है, तो ट्री इज इम्बैलेंस्ड एंड द इम्बैलेंस इज ऑन द रूट नोड।
लेकिन वी हैव टू आइडेंटिफाई द केस इफ इट्स एन इनसाइड केस और एन आउटसाइड केस। सर ये इनसाइड केस है सर, सामने नजर आ रहा है। कोसाइन किसी और को बोलने दें। बाकी लोगों को भी सामने नजर आ रहा है कि इनसाइड केस है। जैसे शेर ने कहा डबल रोटेशन, शेजिल ने कहा मे बी सिंगल। शेजिल क्यों? अच्छा जी, रिमेंबर मैंने कहा था कि whenever we find an imbalance on a node, we call that node as node number A. And we see which side is heavy. If its right side is heavy, then we check if we check which side of this right child is heavy. So in this case, this 4 is the right child. And we want to check the side which is heavier for this 4. So the right side is heavy. So the case is this imbalanced node, node number A, it has right side heavy and the right child has this right side again heavy. आगे की बात नहीं की कि आगे लेफ्ट पे इंसर्शन है या राइट पे इंसर्शन है, ये वाली बात नहीं की। बात सिर्फ दो लेवल्स की है। The node which is imbalanced, we check if it's right heavy or left heavy. It's right heavy. Then we check if the right child is right heavy or left heavy. And we found that the child, that is 4 is right heavy. So the case is right of right. So that's a single rotation. Got it? That's a single rotation. That's not a double rotation. ठीक है जी, we have the case के the imbalanced node, that is root node, it has right side heavy and towards its right again the right side is heavy. So that's a right of right. Okay, so that's a single left rotation case. ठीक हो गया जी? So single left rotation case. So we would actually just perform a single left rotation and now here what we have is that when we perform a rotation, we have this left child of the right child. So we have to adjust this as well. So this 3 would detach itself from 4 and move its connection towards the left subtree. Okay, अब आपने देखना है कि that's a special case. So what we have here is that we would perform a rotation on this node number 2. Let me change the color of my pen for the rotation because this is a slightly different rotation. So this 3 would detach itself and move its connection towards the left subtree. Okay, but the rotation is performed here on the node number 2. So when we let's say we put Mr. R over here, let me slow down a bit and ask it to pull this one node 1 downwards. It would go downwards, 2 would go downwards, 4 would go upward, 6 would go upward. So 4 becomes the root node, 2 and 1 go down. So 4 becomes the root node, 2 and 1 go downward. And I said this 3, which was the left child of 3, it has detached itself from this node. So 3, which was somewhere around here, it was previously connected on this side, but it shifted and rotated its connection towards left side and connected here. So it became the right child of 2. Okay, and further 4 had this 6 on the left side and 5 on the left, sorry, 6 on the right side and 5 on the left of 6. So that's the final tree. Got it? So that's a single rotation case. You see, this is an imbalanced tree. Oh, let me go back to the values that I actually inserted in the tree. So I inserted 5 before 6. So 5 was here and 6 was here. So this is the 5 node and this is the 6 node, like this. Okay. So this is the final tree according to this data in this example. Okay. Uh, any confusion, Kosan? Are you clear? Does this make sense? सर ये 3 का नहीं समझ आया कि ये 2 पे कैसे चला गया और 1 पे क्यों नहीं गया?
ये वाला पॉइंट रिमेंबर, ये जो मैंने ग्रीन में मार्क किया हुआ है, कि जो भी, ये देखें यहाँ पे, ये जो मैंने कहा था बी का कोई लेफ्ट चाइल्ड अगर होगा ना, यानी कि इनबैलेंस नोड के राइट चाइल्ड का अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड भी है, तो वो लेफ्ट चाइल्ड अपने आप को यहाँ से डिटैच करके मूव करेगा दूसरी साइड पे, तो फाइनल ट्री में ये ए का राइट चाइल्ड बन जाएगा। यही केस हमने फॉलो किए भी। तो हमने वो जो थ्री था, वो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी टू, यहाँ पे लिखा हुआ था फोर, और यहाँ पे था थ्री। तो थ्री, जब फोर ऊपर मूव हो गया तो थ्री उसके लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, फोर यहाँ पे गया, टू यहाँ पे आया, तो ये जो थ्री था ये टू का राइट चाइल्ड ही बन सकते हैं ना, फोर की लेफ्ट सब ट्री में टू का राइट चाइल्ड। तो वी हैव फॉलोड दी बीएसटी प्रॉपर्टी। यस, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है हो जी। गया। जी तो सर। हमने ये बीएसटी प्रॉपर्टी ही फॉलो की, हमने कुछ नया काम नहीं किया। ठीक है जी। तो ये जो थ्री है ये साइड पे चला गया, सही है। अच्छा, so this is the tree so far. Then we add 7 in this tree. So after adding 7, what we have is, let me move to the red ink. Okay, 7 is bigger than 4, bigger than 5, and it goes towards the right of 6. ठीक हो गया जी। तो जब भी मैंने चेक किया तो 6 was fine because the difference is 1. 5, the balance factor of 5 is left side has height -1 and the right side has height 1. So the balance factor is -2. So this node 5 is imbalanced. So we would just perform a case is right of right. So we just perform a single left rotation. So the rotation is that we have, when we perform rotation on this 5 node, we pull it downwards and 6 becomes the root node. So the final tree would be that 4 is the root node, 6 comes as the right child, 5 is its left child, 7 is towards the right of 6, then 2 on the left of 4, 1 on the left of 2, and 3 on the right of 2. So that's the final tree for this data set. Okay, all the cases that we handled so far are the single rotation cases. Remember that? एंड थैंक यू शेजिल कि आपने ये जो अभी लिख दिया है ट्री, ये हमें बाद में अभी काम आएगा अगली स्लाइड पे। ठीक है जी। तो अभी एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है जी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सारी वो एनिमेशन है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली हमारे पास जो ट्री बना आफ्टर इंसर्टिंग 7, वो ये वाला ट्री था जो हमने अभी ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। ओके, इसके बाद हम कुछ और वैल्यूज इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी। ये वैल्यूज हैं 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 एंड 8। ठीक है, इनफैक्ट ये 8 के बाद 9 भी है, ये आखिर में एक और वैल्यू आप यहाँ पे लिख लें 8 के बाद 9। ठीक है जी। वेल इंसर्ट दीज वैल्यूज इन द प्रीवियस ट्री जो हमने अभी बनाया था, उसी ट्री में फर्दर एडिशन करेंगे। सो द प्रीवियस ट्री वाज, जो भी शेजर ने बनाया हुआ है, दैट इज 4 ऑन द रूट, 2 on the left, 1 on further right left, 3 in the right of 2, 6, 5, and 7. So we'll start from here and we would insert 16 in this tree. ठीक है जी। तो when we add 16 in this tree, that's the biggest value, so it goes on the right of 7. ठीक है जी। अब ये कोई भी केस हो सकता है, ये सिंगल रोटेशन का भी हो सकता है, डबल रोटेशन का भी हो सकता है, और हो सकता है कि ना कोई डिस्टर्बेंस आई हो। सो लेट्स चेक। ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि लेफ्ट और राइट की हाइट में 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्लियरली नजर आ रहा है कि लेफ्ट और राइट की हाइट में 1 का डिफरेंस है। लेट्स चेक 4। 4 की लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में भी, अगर आप ये सिंपल देख लें, यहाँ पे हाइट यहाँ से पता चल रही है। ठीक है जी। तो 1 का डिफरेंस है, सो इट्स अ बैलेंस ट्री। ठीक है जी। मतलब मैंने भी जानबूझ के पूरा मैथमेटिक्स नहीं की, लेकिन यू कुड डू दैट। लेकिन वी कैन क्लियरली सी के द बैलेंस फैक्टर इज नॉट डिस्टर्ब, बिकॉज आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल द ब्रांचेस वर इक्वल, आई जस्ट एडेड वन वैल्यू। द ओनली डिफरेंस दैट इट कैन मेक इज दैट इट कैन add 1 to the height of any of one branch. Yeah, the only difference that it can, the maximum difference that it can have is of 1. Okay, now let's add another value, that's 15. 15 is bigger than 6, 7, and it's smaller than 16. So it's added on the left of 16.
ठीक हो गया जी। शेजिल क्या कहते हैं, ये कौन सा केस है? ठीक है जी, तो आपने चेक कैसे किया कि 16 के तो लेफ्ट राइट में एक का डिफरेंस है, लेकिन 7 के लेफ्ट पे -1 और राइट पे 1 हाइट है, तो -1 विच इज इक्वल टू -2, तो 7 इज बैलेंस। और अगर आप देखें तो एडिशन कैसे हुई है, इंसर्शन इसके राइट सब ट्री के लेफ्ट पे इंसर्शन है, सो दैट्स एन इनसाइड केस। ठीक हो गया जी, तो आप लोग फॉलो करें, वेरी गुड। तो अगर ये इनसाइड केस है तो देखिए कौन सी रोटेशन है, इस 7 पे परफॉर्म होगी लेफ्ट रोटेशन, ये 7 पे परफॉर्म होगी लेफ्ट रोटेशन, लेकिन उससे पहले उसके चाइल्ड 16 पे परफॉर्म करनी पड़ेगी राइट रोटेशन, सो दैट इज एल आर रोटेशन। एल रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन इज ऑन द पेरेंट एंड आर रोटेशन इज ऑन इट्स राइट चाइल्ड। शेजिल वो उल्टा था नाम, ठीक है। पहला जो लफ्ज लिखा हुआ है ये पेरेंट की रोटेशन है, जो दूसरा लेटर है दैट इज द रोटेशन ऑन द चाइल्ड। तो चाइल्ड पे राइट रोटेशन है और पेरेंट पे लेफ्ट रोटेशन है, तो एल आर रोटेशन, ठीक है। तो दैट्स एन एल आर रोटेशन, लेकिन रोटेशन परफॉर्म कैसे होगी, पहले आई वुड place this Mr. R here and ask it to pull 16 downwards and pull 15 upwards, ठीक है। तो पहला स्टेप ये बनेगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रा करूं तो 7 के नीचे 15 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रोटेशन के बाद, और 16 उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा, तो दिस हैज नाउ बिकम द आउटसाइड केस, दैट्स द इंटरमीडिएट स्टेप। बाकी ट्री नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैंने इंटरमीडिएट स्टेप आफ्टर द फर्स्ट राइट रोटेशन ऑन 16 जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म की थी, वो रोटेशन के बाद मैंने आपको ये वाला ट्री दिखा दी। तो 7, 15 एंड 16 दे आर नाउ इन अ स्ट्रेट लाइन, और आप क्लियरली देख सकते हैं दैट्स एन आउटसाइड केस, ठीक है जी। तो नाउ वी परफॉर्म द रोटेशन दैट इज द लेफ्ट रोटेशन ऑन द इम्बैलेंस नोड on 7. So the left rotation, after performing left rotation, what I would have is I would place Mr. R over here and ask it to pull this 7 downwards and pull 15 and 16 upwards. So the tree that, if I just draw this subtree again, 15 would be on the root, 7 would be on left of it, and 16 would be on right of it. So that would the transformation of this part of the tree. Of this part of the tree, the transformation would be after 2 rotation, it would be like this. 15 would become the root node, 7 would be towards left of 15, and 16 would be on the right of 15. So this 15 is connected to 6. Okay, so let me just erase these extra trees and draw the final tree over there. ये दोनों सिंगल रोटेशंस बीच की समझ आ गई सबको ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? So the final tree would be K. We have this 4 over here, and we have 6, and towards right of 6 we have the final transform tree where 15 is on the root, 7 is on its left, 16 is on its right, and 6 had this left subtree, left child as 5, 4 has this left child as 2, 1 and 3. Okay, that's the final tree. अगर आप देखें तो the height difference between height is still 1. These are the shorter branches and these two are the longer branches, but the difference is 1. Okay, so we can clearly say that this is an AVL tree. Okay. So after inserting this 15, we have 14. So the 14 is smaller than 15. Okay, 4 से बड़ा, 6 से बड़ा, but smaller than 15. So it goes towards left, and it's bigger than 7, so it goes on the right side of 7. So 14 comes here. ठीक है, ये जो इंसर्ट मैं बड़ी स्पीड में कर रहा हूं, जस्ट रिमेंबर कि आपको ये बीएसटी इंसर्ट भी आता हो। ठीक है, मैंने 14 को बिल्कुल बीएसटी के प्रोसेस के मुताबिक इंसर्ट किया है, ये 4 से बड़ा, 6 से बड़ा, 15 से छोटा, 7 से बड़ा। ये जी, तो ये इस वजह से यहाँ पे इंसर्ट हुआ। तो पहला इंसर्ट हुआ बीएसटी के मुताबिक, एंड नाउ विल चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ इट्स पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट। सो पेरेंट तो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो पेरेंट का तो छोड़ दें, विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट। तो ये 15 है, 15 के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में 1 का डिफरेंस है। 6 पे चले जाए फर्दर अप,
इस पूरी ब्रांच पे ऊपर तक हमें चेक करना पड़ेगा। तो 15 का पेरेंट 6, 6 के लेफ्ट सब ट्री की हाइट है 0, राइट सब ट्री की हाइट है 2, 0 minus 2 is -2, तो दिस 6 is imbalance। ठीक है जी। तो इफ 6 इज इम्बैलेंस तो अब केस चेक करें, 6 की राइट साइड हैवी है और इसका जो राइट चाइल्ड है उसकी लेफ्ट साइड हैवी है, तो कौन सा केस बना? ठीक है, तो राइट चाइल्ड की लेफ्ट साइड हैवी है, तो पहली रोटेशन जो 6 पे परफॉर्म होगी दैट वुड बी अ लेफ्ट रोटेशन, और जो दूसरी रोटेशन सॉरी जो पेरेंट पे रोटेशन परफॉर्म होगी दैट इज द लेफ्ट रोटेशन, लेकिन जो रोटेशन चाइल्ड पे परफॉर्म होगी दैट वुड बी द राइट रोटेशन। सो द केस इज एल आर रोटेशन अगेन। ठीक है, लेकिन दैट्स एन इनसाइड केस। जी जी। सही, दोबारा ज़रा समझा दें ये 6 14 वाली इंसर्ट बात। हुआ है, 14 इंसर्ट हुआ, 14 का पेरेंट को तो चेक नहीं करना, ग्रैंड पेरेंट से चेक करेंगे। ग्रैंड पेरेंट जो है उसकी लेफ्ट साइड सब ट्री की हाइट और राइट सब ट्री की हाइट अगर हम सिर्फ पिक्चर में देखें तो नजर आ रहा है कि डिफरेंस 1 का है। ठीक है, तो हम इसको भी चेक नहीं करते, हम 6 पे चले जाते हैं। 6 के लेफ्ट सब ट्री यानी कि 5 वाले नोड, लीफ नोड की हाइट होती है 0, तो 0 माइनस राइट सब ट्री 15 वाला सब ट्री, सही। 15 वाले सब ट्री की हाइट है इस लॉन्गेस्ट ब्रांच पे 2 2 से ठीक है। है, तो 0 minus 2 is -2, तो बैलेंस फैक्टर इज -2 विच इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द अलाउड बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो 6 इज इम्बैलेंस, लेकिन इम्बैलेंस कैसे है कि 6 का राइट चाइल्ड हैवी है और हाँ, राइट ये चाइल्ड में सही। लेफ्ट साइड हैवी है। राइट साइड है ये सिर्फ। ठीक है, और नाम इस रोटेशन का इस तरह से है कि जो पेरेंट है उस पर रोटेशन कौन सी परफॉर्म हो रही है, दैट इज लेफ्ट रोटेशन, यानी कि 6 को हम रोटेट करेंगे इस तरह से लेफ्ट साइड पे। तो ये पहली, ये पेरेंट पे रोटेशन है उसको पहले लिखना है, और जो चाइल्ड रोटेशन है दैट इज टुवर्ड्स राइट साइड, ताकि इसका ये जो इनसाइड पे वेट ज्यादा है वो बाएं वाली साइड पे आ जाए, ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें। तो दैट्स अ राइट सही। रोटेशन, ये बाद में परफॉर्म होगी, तो एल आर रोटेशन। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं तो पहली रोटेशन जो 15 पे परफॉर्म हो रही है उसके केस में मैं 16 को नीचे पुल करूंगा, 15 भी नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। अब जरा ये रोटेशन खुद परफॉर्म करके देखें क्या होगी। दैट्स अ ट्रिकी केस। आपको ये रोटेशन जरा खुद परफॉर्म करके देखें, अगर ये रोटेशन आप खुद परफॉर्म कर लेते हैं 15 वाली, फिर हम 6 पे दूसरी रोटेशन मैं परफॉर्म करता हूँ, तो आप जरा 15 की रोटेशन परफॉर्म करके ट्री चैट में पेस्ट करके दिखाएं मुझे क्या बनता है। बाकी लोग 14 कैसे ऊपर गया जी हनान? 7 बिकेम द रूट, मतलब 15 की जगह पे 7 चला गया, 15 और 16 राइट पे नीचे चले गए। 14 के साथ क्या होगा, यही ट्रिक थी यहाँ पे। जब सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो 14 detaches itself from 7 and makes its connection in the right subtree, क्योंकि जब इस सब ट्री का रूट 7 होगा तो 14 तो उससे बड़ा है ना, तो 14 को राइट सब ट्री में जाना चाहिए। ठीक है, तो शेजिल ने जब लाया दैट्स करेक्ट। तो अगर मैं सिर्फ इस पार्ट के इस 15 वाले पार्ट को दोबारा बनाऊं तो 7 बन जाएगा रूट पे। मैं इनफैक्ट इसको दूसरी इंक से ड्रॉ करता हूँ। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि कि व्हाट वी हैव इज कि अगर मैं इसको इस पार्ट को, ये जो ये वाला पार्ट है इसको रीड्रा करूं राइट रोटेशन के बाद, तो राइट रोटेशन के बाद मैंने यहाँ पे पुल किया ना, तो 15 और 16 नीचे गए हैं, 7 ऊपर गए।
और ये जो 14 इसने इसको अपने अपने आप को यहाँ से डिटैच किया है और अपना कनेक्शन इस साइड पे मूव करके यहाँ कनेक्ट हुआ है। तो 7 चला गया रूट पे, 15 नीचे, 16 फर्दर नीचे चला गया, और ये जो 14 यहाँ पे कनेक्टेड था इसके साथ कनेक्टेड था यहाँ पे 14 पर। ये 14 यहाँ पे था, ये जो इस साइड पे कनेक्टेड था इसने अपना कनेक्शन मूव किया इस साइड पे और यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो दैट वुड बी द ट्री जो कि सिंगल रोटेशन ऑन 15 इस नोट पे परफॉर्म करने के बाद में 7 रूट पे चला गया, 15 16 नीचे आया, 14 15 के साथ कनेक्ट हो गया। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इस ट्री की अभी भी इन ऑर्डर रिवर्सल करूं तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। 7 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है तो पहले 7 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आएगा तो पहले 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16। तो 7 14 15 16 दैट्स एन इन ऑर्डर रिवर्सल दैट इज सॉर्टेड। अच्छा, उसके बाद 6 के ऊपर रोटेशन, तो यहाँ पे अभी 6 मौजूद है जो कि 7 का पेरेंट बना हुआ है और 6 के लेफ्ट पे 5 है। तो अब मैं 6 के ऊपर यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म करूंगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर आप देखें तो नाउ दिस इज अगर 6 के रिस्पेक्ट से देखें तो आफ्टर दिस फर्स्ट रोटेशन 6 की राइट साइड हैवी है और राइट चाइल्ड की भी अब राइट साइड हैवी है। तो दैट्स अ केस where we perform a single left rotation. So we transform the previous case that was an inside case into a case that is now an outside case. ठीक हो गया जी? कोसाइन का क्वेश्चन था। नहीं सर, ये मैं पूछ रहा था कि ये जो 5 है, हम्म। ये क्या कहते हैं, ये इम्बेलेंस कर रहा है ना, तो हाँ ये तो सिंगल लेफ्ट हो जाएगा। जी जी, ठीक है ना। तो हम वही रोटेशन अभी कर रहे हैं, अभी हम इन द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं, अभी सारी एडजस्टमेंट नहीं हुई ना। तो सही सही। आखिरी अभी दूसरी रोटेशन रहती है, एक रोटेशन हुई है एक रहती है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग सेकंड रोटेशन क्या होगा जी कि यहाँ से जब इसको नीचे पुल किया जाएगा, 5 नीचे आएगा, 6 नीचे आएगा, 7 ऊपर चला जाएगा रूट पे। तो 7 चला गया रूट पे, 6 नीचे और 5 उसके भी नीचे। ठीक हो गया, ये तो नीचे चलेगी। अच्छा, 7 का बाई चांस कोई लेफ्ट चाइल्ड था नहीं, अगर 7 का लेफ्ट चाइल्ड होता तो वो यहाँ जाके 6 के साथ कनेक्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन 7 का लेफ्ट चाइल्ड पहले कोई भी नहीं था। अच्छा, 7 के साथ नीचे जो कनेक्टेड है राइट साइड पे दैट इज 15, 15 के लेफ्ट पे कनेक्टेड है 14 और राइट पे कनेक्टेड है 16। सो दैट्स अ बैलेंस ट्री। ठीक हो गया। और अगर आप देखेंगे इस 14 के इंसर्ट होने से पहले ये 6 वाले ट्री की हाइट थी 2, और अभी भी जो नया ट्री बना है 6 की जगह पे अब 7 आ गई, इसकी भी हाइट है 2। इट मीन्स के ऊपर 4 को चेक करने की जरूरत नहीं रही। लेट मी जस्ट शो दी फाइनल, ये फाइनल ट्री जो बना। इससे वो बैलेंस फैक्टर जो है वो 0 हो गया इसका, 7 का। हाँ जी। तो तो हमने बेसिकली 6 जो इस पोजीशन पे था यानी कि 4 के राइट साइड जो था उसकी हाइट पहले थी 2, जिसकी वजह से 4 डिस्टर्ब नहीं था। तो अभी जब हमने दोबारा रोटेशन परफॉर्म कर दी तो अभी जो 7 है वो 4 का राइट साइड है, उसकी हाइट अभी भी 2 ही है। तो 4 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा इस इंसर्ट का। ठीक है जी। तो 4 इज स्टिल ऑन द रूट, उसके लेफ्ट पे 2, 2 के लेफ्ट पे 1 और 2 के राइट पे 3, 4 के लेफ्ट पे अब 7 आ गए। ठीक है, तो ये वाला ट्री मैं पूरा ऊपर ड्रा कर देता हूँ। 7 के लेफ्ट पे मेरे पास 6 और 6 के लेफ्ट पे मेरे पास 5, 7 के राइट पे है 15, लेफ्ट पे है 14 और राइट पे है 16। ठीक है जी। तो दैट्स द ट्री। अगर देखें तो दिस इज बैलेंस ट्री। अगर यहाँ पे देखें ये शॉर्टर ब्रांचेज हैं, इनसे लॉन्गर ब्रांचेज का डिफरेंस मान का ये 2 का डिफरेंस नहीं है अभी तक। ठीक है जी। ओके जी। अभी मैं बाकी ट्रीज को इरेज करता हूँ और यहीं पे मजीद इंसर्शन डिलीशन भी करते हैं। ठीक है जी, एंड विल सी कि ये कैसे मैनेज होगा मजीद। अभी हमने कुछ वैल्यूज और भी इंसर्ट करनी है। ओके जी। तो अच्छा जी, आफ्टर इंसर्टिंग हमने अभी तक जो इंसर्ट किया था 14 तक इंसर्ट कर लिया। ठीक है जी। तो नाउ विल इंसर्ट 13 इन दिस ट्री। तो 13 वुड बी bigger than 4, bigger than 7, smaller than 15, smaller than 14. So 13 comes here.
अब देखिए ब्रांच लंबी हो गई है ना। तो लेट्स सी कि वे इज द इम्बैलेंस। सो पेरेंट को तो कभी चेक नहीं करना, हमेशा ग्रैंड पेरेंट से स्टार्ट करेंगे। ग्रैंड पेरेंट के देखें तो लेफ्ट और राइट पे वन का डिफरेंस है। सेवन का चेक करें तो लेफ्ट और राइट पे वन का डिफरेंस है। लेकिन नाउ इफ वी चेक फोर, तो फोर पे इम्बैलेंस मौजूद है जी। आई वुड वांट somebody other than Shazil and Hussain and Daniel कि वो आंसर करे। फोर पे इम्बैलेंस है, ठीक है, मैंने पहले वो ड्रा कर दिया था, शक्ल से भी नजर आ रहा है। लेफ्ट सब ट्री की हाइट वन है और राइट सब ट्री की हाइट थ्री है। ठीक है, सेवन वाले ट्री की हाइट है थ्री और टू वाले ट्री की हाइट है वन। तो इम्बैलेंस तो आ गया। तो फोर जो है इम्बैलेंस है, उसमें रोटेशन बताएं कौन सी है। तो हनान ने कहा जी सिंगल लेफ्ट। तो लेट्स चेक के कौन सी रोटेशन है। फोर की राइट साइड हैवी है, और अगर फर्दर देखें तो सेवन की भी राइट साइड ही हैवी है। ठीक है, तो फॉर फोर दिस इज एन आउटसाइड केस, क्योंकि जब मैं रोटेशन परफॉर्म करूंगा तो जो इफेक्टिव नोड होंगे वो ये दो नोड होंगे ना। ठीक है, और इन दोनों को ऊपर पुल कर लेने से ये वाली साइड एक स्टेप ऊपर आ जाएगी, तो ये वाली जो हाइट नीचे गई थी एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। तो ये वाला ट्री एक स्टेप ऊपर चला जाएगी, ये वाली ब्रांच एक स्टेप ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो आउटसाइड केस। तो फॉर आउटसाइड केस आई जस्ट हैव वन सिंगल लेफ्ट रोटेशन। ठीक है जी। तो फॉर सिंगल लेफ्ट रोटेशन, अब ये देखें सेवन का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। दिस लेफ्ट चाइल्ड वुड डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम हियर। कि मैं ये जो इसकी करेक्शन बता रहा हूँ वो यहाँ पे ग्रीन से बता रहा हूँ। ये वाली साइड यहाँ से डिटैच होगी और ये जाके इधर कनेक्ट हो जाएगी। और ये जो फोर है ये नीचे चला जाएगा, ये टू फर्दर नीचे चला जाएगा, वन फर्दर नीचे चला जाएगा। ठीक है, वन एंड थ्री दोनों फर्दर नीचे चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है जी। और ये सेवन ऊपर जाएगा, फिफ्टीन ऊपर जाएगा, सिक्सटीन ऊपर जाएगा और ये फोर्टीन भी ऊपर जाएगा, तो ये थर्टीन भी एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। सही है जी। तो द फाइनल आउटपुट वुड बी कि सेवन इज द रूट नोड नाउ। सेवन इज द रूट नोड। सेवन के लेफ्ट पे चला गया फोर, फोर के लेफ्ट पे टू, टू के लेफ्ट पे वन और राइट पे थ्री, फोर के राइट पे अब जाएगा ये वाला सिक्स। देखिए मैंने ये कहा था ना, यहाँ पे जो नोड आएगा इस जगह पे, राइट नंबर वन पे, लेवल नंबर वन पे, इस पोजीशन पे जो भी नोड आएगा वो सिक्स का पेरेंट बनेगा। तो फोर के राइट पे है सिक्स, और सेवन के साथ जो कुछ अटैच था वो एज इट इज। सेवन के साथ फिफ्टीन अटैच था, फिफ्टीन के सॉरी सिक्स के साथ यहाँ पे फाइव भी अटैच है। फिर लेफ्ट पे, फिफ्टीन के लेफ्ट पे आ गया फोर्टीन, फोर्टीन के लेफ्ट पे आ गया थर्टीन, फिफ्टीन के राइट पे है सिक्सटीन। सो दैट्स अ बैलेंस ट्री। ठीक है जी। अब अगर देखें तो जो वेट यहाँ पे हमने ज्यादा कर दिया था बहुत ज्यादा राइट साइड पे, वो हमने सारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। देखिए आप लेफ्ट साइड इज हैवी, मतलब ज्यादा नोड्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, द राइट साइड हैज अ फ्यू लेसर नोड्स। इट सीम्स कि उस तरफ कम नोड्स हैं। ठीक है, इनफैक्ट एक नोड कम ही है। सही है। तो हमने वेट को शिफ्ट किया फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है जी। आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सर बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो वैसे दिस these rotations we actually ask these rotations in the exam as well। ठीक है जी। हम बड़ा सा डाटा देते हैं 20 वैल्यूज का, एंड वी आस्क यू टू परफॉर्म these rotations and show us the final tree। तो दिस इज अ चैलेंजिंग पार्ट। ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आप घर जाएं, इसी डाटा को रिवर्स ऑर्डर में बना लें। यानी कि ये लिखे ना 16 15 14 13 12, एग्जैक्टली उल्टा कर दें। 9 8 10 11 12 13 14 15 16, इसको इंसर्ट करें ट्री के अंदर, और उसके बाद इंसर्ट करें 7 6 5 4 1 1 2 3। तो आपके पास बहुत से केसेस पहले मौजूद है। तो आप यही सीक्वेंस में इंसर्ट करके देखें तो आपकी एग्जैक्ट उल्टी रोटेशन हो रही होंगी। तो डेफिनेटली आपको हर दफा जीरो से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी रोटेशन हो रही है। तो दैट्स फॉर प्रैक्टिस। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो आप इस तरह मेरी तरह बैठ के नहीं कर सकते कि आप लेक्चर देने आए और आप आगे डायरेक्टली ट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, सर ये पेपर में सर आपको आधा घंटा लगेगा कम से कम इतनी वैल्यूज को इंसर्ट करते हुए। जी को सही। सर फॉर द इजीनेस सर आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं हमें। दे दिया ना। सर इसका सलूशन भी दे मतलब एंड में बता दीजिएगा कि इसका क्या आंसर है।
ना तो जनाब, ये ट्रिक है। हाँ, ये आपकी ट्रिक है कि आप चाहते हैं कि मैं कोई एग्जांपल सॉल्व करके दूं आपको सारी की सारी। नहीं सर, मतलब आप मैं ये ऐसा कह करें रहा कि आप सॉल्व करें, और सही, मैं क्लासरूम के ऊपर एक सबमिशन टैब बनाता हूँ, आप उस पर ठीक है, सबमिट कराएं और मैं उसको चेक कर लूंगा कि आपने ठीक किया या गलत किया। और ठीक है, मैं पेपर ठीक की है, तरह क्रॉस लगा दूंगा जहां से आगे गलत होगा। सही है। ठीक है सही जी। रिवर्स ऑर्डर में करना है ना? हाँ, आप इसी डाटा को बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में, 9 सबसे पहले, फिर 8 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद 7 6 5 4 1 2 3। अच्छा, अच्छा, सही। ठीक है मुझे लगा जी। सिर्फ़ वो पिछला ट्री बना हुआ है तो नहीं नहीं नहीं, इसको जीरो से। सही है सर, सही। ठीक है ठीक जी। है। तो मतलब ये मैंने सिर्फ आपको आसानी के लिए कहा है कि इसी डाटा को रिवर्स करके इंसर्ट करके देख लें, वरना आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा उठा लें। हमने पीछे भी तो इतने सारे एग्जांपल्स किए हैं ना, लिंक लिस्ट वाली एग्जांपल्स भी थी, स्टैक वाली एग्जांपल्स भी थी, डाटा सेट्स तो बहुत सारे हैं। जी सर। ठीक है, अगर इतनी बात है, एक सी प्लस प्लस कोड लिखें, रैंडम नंबर जनरेट करें 13, रेंजिंग बिटवीन मे बी 1 to 10, रेंजिंग बिटवीन 1 to 15, यूनिक नंबर होने चाहिए। जो भी सीक्वेंस आ गया उस सीक्वेंस को आप इंसर्ट कर लें अपनी ट्री में। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, सही। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनफैक्ट टाइम्स अप। मैं जल्दी से 12 11 10 8 9 को इंसर्ट करता हूँ। तो 12 इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 13। ठीक करेंगे तो ये इस तरह से जो मेरे पास ट्री बनेगा, दैट इज सिंगल राइट रोटेशन ऑन दी ऑन दिस 14। ठीक है, तो 14 सिंगल राइट रोटेट करेगा तो जो फाइनल ट्री बनेगा दैट इज लाइक के मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे रह जाएगा 12, और 14 इधर राइट साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जब मैंने 12 इंसर्ट कर लिया, इसके बाद 11 इंसर्ट हुआ, तो दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 12। ठीक है जी, 11 इंसर्ट हुआ। अब भी इम्बैलेंस है कि नहीं, तो हम ऊपर चले तो 15 पे इम्बैलेंस है। 15 के लेफ्ट पे इंसर्ट हुआ हो तो 15 पे एक राइट रोटेशन करेंगे। तो जब राइट रोटेशन करेंगे 15 के ऊपर, तो मेरे पास जो ट्री बनेगा फाइनली, दैट वुड बी समथिंग लाइक के 7 रूट पे है, 4 उसके लेफ्ट पे है, 2 उसके लेफ्ट पे है, 1 उसके लेफ्ट पे है, 3 उसके राइट पे है, 4 के राइट पे 6 है, 6 के लेफ्ट पे 5 है, 7 के राइट पे, अब यहाँ रोटेशन है। रोटेशन करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13, 13 के राइट पे होगा मेरे पास 15, और उसके नीचे होगा 16, और 15 के लेफ्ट पे मेरे पास होगा 14। ठीक है जी, ये 14 जो है यहाँ से दूसरी साइड पे चला जाएगा। अच्छा, 13 के लेफ्ट पे मेरे पास है 12, और उसके लेफ्ट पे मेरे पास है 11। ठीक है जी, तो ये ट्री बना हुआ है। इसके बाद मैंने इंसर्ट किया 11 के बाद 10, 10 इंसर्ट हुआ, तो वो 12 से छोटा, 11 से छोटा, 10 यहाँ पे इंसर्ट हुआ, तो ये सिंपल वन राइट रोटेशन है 12 के ऊपर। तो जब मैं वो रोटेशन परफॉर्म करूंगा तो जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, ये बस 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा जी, तो जब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू इंसर्ट की, तो 12 पे जब सिंगल राइट रोटेशन हुई तो बाकी ट्री तो एज इट इज रह गया। तो मेरे पास हुआ ये कि 7 यहाँ पे था, 7 के लेफ्ट पे 4, उसके लेफ्ट पे 2, लेफ्ट पे 1, राइट पे 3, इसके राइट पे 6, इसके लेफ्ट पे 5, 7 के राइट पे 13। अब ये 12 पे रोटेशन है, तो 12 की जगह यहाँ पे 11 आ गया, 12 राइट पे चला गया, और 10 उसके लेफ्ट पे आ गया। 13 के राइट पे अभी भी 15 है, और 15 के लेफ्ट पे आई हैव 14, एंड ऑन द राइट आई हैव 16। ठीक है जी। तो अब ये देखना बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, सिर्फ ये बीच में से एक नोट मिसिंग है, वरना ये बिल्कुल कंप्लीट ट्री भी बन गया। अच्छा, इसके बाद मैंने 8 इंसर्ट किया, तो 7 से बड़ा है, 13 से छोटा, 11 10 से छोटा, तो 8 क्लोज हियर। और अभी अगर आप देखें तो कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सारे बैलेंस थे। अब मैंने 9 इंसर्ट किया, तो दैट गोज ऑन द राइट ऑफ 8। ठीक है, तो अगर रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो दैट्स ऑन द नोट 10, और ये डबल रोटेशन है, तो डबल रोटेशन में पहले ये 9 इस तरफ रोटेट होगा, इनकी 8 से रोटेशन होगी, और दूसरी रोटेशन यहाँ पे होगी। तो अगर मैं फाइनल ट्री बनाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 9, और उसके लेफ्ट पे 8 और राइट पे 10। ठीक है जी। सो द फाइनल ट्री इज के यहाँ पे मेरे पास 9 आ गया, लेफ्ट पे 8,
और राइट बेटा, तो दैट्स द फाइनल। ठीक है जी। तो यहाँ पे विल स्टॉप एंड विल डिस्कस द इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन कोड इन द नेक्स्ट लेक्चर। जी जी। सर ये जो है क्या कहते हैं, जो 10 पे आपने एनोटेशन परफॉर्म की है, हम्म। सर इसके जितने भी जो 11 है, आई गेस 11 ही है, तो इ- इसके जितने भी इस लेवल पे जितने भी नोट्स पड़े हुए हैं, उस हिसाब से लाइक बैलेंस ट्री के हिसाब से ही आपने कहा कि इस पे इसके फर्दर कोई मतलब जरूरत नहीं होगी ये ट्री था ना बैलेंसिंग। पहले, जब मैंने इस पे सिंगल रोटेशन ये वाली परफॉर्म की तो मेरे पास आ गया 10, 9, 8। फिर मैंने दूसरी रोटेशन यहाँ पे परफॉर्म की तो मेरे पास आ गया 9, 8 एंड 10। ठीक जी है, जी सर, वो वो मैंने यहाँ पे अटैच की। तो अगर आप राइट। देखें तो ये वो लेवल है जहां तक सारी ब्रांचेस हैं, और सिर्फ ये वाली दो ब्रांचेस एक एक स्टेप लंबी हैं, तो दिस इज अ बैलेंस ट्री। राइट है ना? राइट राइट राइट। ठीक है जी। चलिए, we'll stop here and we'll discuss the insert and delete operations in the next lecture। ठीक है, हम कोड देखेंगे उसका। ओके जी, थैंक यू।